Hello. Hello. Can we start? All of you joined? Is my screen is visible? Audio is clear? Yes, sir. Okay. So in previous session, we stopped at one question. That is this particular question we stopped, and because of less time, I have not covered this question in the previous session. So first we will discuss this question. This question, it contains one concept. So first we have to try to understand the concept. So this is the one of the test, objective and projective personality test. Personality test करने के लिए एक individual का projective and objective test are there. So what is the projective and objective test? We will see. So what is objective test? This is a self-reporting system that measures personality traits, yes or no scale. इसमें क्या रहता है, किसी का हम पर्सनालिटी टेस्ट करना है तो एक स्केल देते हैं, वेदर यू विल गेट इजीली एंगर, इस पे दो ऑप्शन देते, यस और नो. इफ पर्सन टिक्स यस, he may also ticks no. So these tests are considered objective as there is no intervention by the test maker to manipulate the answer. The focus of control refers to an individual perception about underlying main cause of events in his her life. So उनका लाइफ में क्या इवेंट्स एंड इमोशंस रहते हैं ना, उसके ऊपर वो खुद का खुद मार्क कर लेगा इसका पर्सनालिटी चेक करने के लिए. वेदर यू आर हेल्पिंग द पीपल इन in your own problem also, then if you question and you give the yes or no, the person individual, he will take yes or no based on his experience and perception in or events in or his life. So based on this he will mark the, it is on the scale. What is scale? Yes or no scale. So objective, there is no interest, either intervention or test. I will not ask him. He will I will give paper and I will give yes or no option. He will mark himself. That is the objective test. What is projective test? This test is designed to let a person respond to ambiguous stimuli, presumably revealing hidden emotions. The internal conflicts may also projected by a person into the test. Projective test में क्या होता है, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा वेदर यू इजीली गेट एंगर, अगर वही क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट में दिया तो क्या होता है, ही इज एबल टू आंसर यस और नो, दोनों ऑप्शन रहता है. बट वही क्वेश्चन वेदर यू आर इजीली गेट एंगर, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा इनको, सो ही टेल्स नो, देन आई विल गिव द स्टिमुलाई. थिंक इफ ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसे कंडीशन में आपको आप फिर भी आप गुस्से नहीं होते, एंगर नहीं होते, फिर आई विल गिव द अनदर एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई. किसी आपका फ्रेंड को मारा, आपका घर वाले को मारा, तो इवन आल्सो यू एंगर नहीं होते, ऐसे एक स्टिमुलाई दिया, देन ही मे रिवील हिज अदर हिडन इमोशंस. Internal conflicts may be projected by the person into the test. I will projecting his emotions or checking the personality by giving the different ambiguous stimuli. अपने ट्रेवल करते क्या इजीली, बोले तो पर्सन बोलते नहीं बोल सकते यार, यस भी बोल सकते, फर्दर में बोलते अगर ऐसे समर में आप जाते नहीं बोले तो हाँ कभी कभी जाते. सो द बेस्ड ऑन दिस स्टिमुलाई इज इंटरनल conflicts and sudden hidden emotions, we will know. That is the projective test. Objective test, it is yes or no only, there is no intervention of by the test maker. But here the intervention of test maker will give the ambiguous stimuli. Based on that different stimuli, the hidden emotions and internal conflicts of the that person will come out. So based on these objective and projective test, we can test the personality test. Objective and personality test. Personality test करने के लिए these two tests are available. Objective test and projective test. All of you understand this
what is objective test and projective test? Hello? Yes, sir. Okay. Then based on this concept, this question has given. So first one is statement 1. Achievement and aptitude test designed to assess the upper limits of the examine the knowledge and ability. Based on, we also learned the achievement test, aptitude test in the previous session. So statement 1 क्या कहते हैं? Achievement test and aptitude test are designed for the assess फॉर द अपर लिमिट ऑफ एग्जामिनीज द एग्जामिन किसको एग्जामिन कर रहे हैं उसका नॉलेज एंड एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया है. अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट्स ऑफ एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज. स्टेटमेंट 1 ये बोलता है. स्टेटमेंट 2 क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट आर designed to measure the typical behavior and characteristic of the examinees. Which of the following option is correct? Statement 1 क्या बोलता है? Achievement and aptitude test are designed for checking the or assessing the knowledge and abilities. Whether aptitude test क्या बोलते हैं? Whether he is able to do this particular work or particular job के लिए और particular space के लिए ये work ability है क्या नहीं चेक करते. व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट? हाईएस्ट मार्क्स, नॉलेज कितना है. अचीवमेंट इज नथिंग बट अवर फाइनल मार्क्स रहता है ना. अचीवमेंट किया मैंने, फर्स्ट डिस्टिंक्शन किया, फर्स्ट रैंक आया. सो दैट इज द टू मेजर द नॉलेज, अपने कोर्स में कितना नॉलेज लिया. सो दैट इज द अचीवमेंट टेस्ट. लाइक दैट these two are measuring the knowledge and abilities. So whether the statement 1 is correct or not, false or true? Achievement and aptitude test designed to assess the upper limits of examinees' knowledge and abilities. This statement correct or wrong? Correct. Okay, correct. Correct है. So statement 2, objective personality test and projective personality test are designed to measure the typical behavior and characteristic of the examinees. This statement whether correct or wrong? प्रोजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं? पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्जामिनीज, किसको एग्जामिन करना है उनको यूज करते हैं हम. उधर उनका कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी चेक करने के लिए अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट हम यूज नहीं करते. अगर ये स्टेटमेंट रिवर्स में दिया, अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर टिपिकल बिहेवियर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जामिनीज बोल के पूछा तो दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और फॉल्स? हेलो, आपको समझ में आ रहे हो व्हाट आई एम आस्किंग? अगर स्टेटमेंट 1 में अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट डिजाइन टू असेस द टिपिकल बिहेवियर ऑफ द एग्जामिनीज बोल के लिखा होता तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है इन दैट सिनेरियो? Correct. करेक्ट होता है. अभी स्टेटमेंट 2 क्या है बताओ. अभी सी फर्स्ट, सी दिस स्टेटमेंट. ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट आर मेजरिंग द टिपिकल बिहेवियर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जामिनीज. सो दिस स्टेटमेंट वेदर करेक्ट और रॉन्ग? ये क्या पढ़ाई किया हमने? ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट. पर्सनालिटी टेस्ट इधर नाम पे है ना, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर्स. ये टेस्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट हम करते हैं. ये सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट डिजाइंड. ये टेस्ट क्यों डिजाइन किया है? मेजर द टिपिकल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्जामिनीज. So this statement is correct. These tests are meant for this personality tests. These are two types of personality tests designed for measure the behavior, characteristic and personality of the examinees. So this type of statement, this is also correct statement. This is also correct statement. For example, आपको
एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको टेस्ट लेना है. सो अचीवमेंट टेस्ट. अचीवमेंट टेस्ट मतलब क्या है? बेस्ड ऑन युअर डिग्री का मार्क्स, फाइनल मार्क्स. फॉर एग्जांपल एक बड़े एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है. सो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, लाइक जयदेवा. जस्ट फॉर एग्जांपल जयदेवा हॉस्पिटल है, जयदेवा इंस्टीट्यूशन है. सो जयदेवा का डायरेक्टर को हमको इलेक्ट करना है. सो उस पे क्या होता है? अचीवमेंट. अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? उनका सुपर स्पेशलिटी में वो फर्स्ट रैंक स्टूडेंट था वो टाइम पे, वो अचीवमेंट देखते. देन एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड का मतलब whether you are able to give that particular पोजीशन डायरेक्टर. सो उधर एप्टीट्यूड चेक करते हैं हम. ओवरऑल एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देके तो आपको समझ में आता है. अचीवमेंट इज ओनली मार्क्स और परसेंटेज रैंकिंग, बट एप्टीट्यूड इज ओवरऑल testing of a person for whether the given particular responsibility, whether you are able to do. That is the aptitude. Even your NTET is also aptitude. So we in previous class we have seen the aptitude test का explanation क्या है. So that is the aptitude. सेकेंड में क्या होता है? पर्सनालिटी कैसे है दैट पर्सन का. सो पर्सनालिटी चेक करने के लिए टू टाइप्स आते हैं, वेदर ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी और प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट. सो पर्सनालिटी कैसे, उनका पर्सनालिटी कैसे, अगर पर्सनालिटी चेक करना है तो हमको टू टेस्ट मेजर होते हैं. बेस्ड ऑन हिज अचीवमेंट हम उनका पर्सनालिटी चेक नहीं कर सकते. यू मे आस्क दी सर्टन. अगर उनको डायरेक्टर बोल के लेने से पहले कोई क्वेश्चन पूछा होगा यार अथॉरिटी. अगर पेशेंट आ गए, पेशेंट आने के बाद आप इमरजेंसी हार्ट अटैक होके पेशेंट आए रहते, तब आप फॉर्मेलिटीज ये सारे करते बैठते और फर्स्ट ट्रीटमेंट करते बैठते. और व्हाट यू डू और सम आंसर में फर्स्ट प्रियर टू पेशेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट आफ्टर द प्रोटोकॉल्स ऐसे बोलते हैं वो. सो दैट रिफ्लेक्ट्स हिज पर्सनालिटी. ये इनका पर्सनालिटी क्या है, उनका मार्क्स अचीवमेंट से उनका पर्सनालिटी पता नहीं. से टू पर्सनालिटी चेक करने के लिए दीज टू टेस्ट्स आर यूज्ड, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी एंड projected. So then based on this type of question, this type of assessment, they will assess the personality. अगर वही पर्सन अलग तरीके से, फर्स्ट वी हैव टू डू द फॉर्मेलिटीज. पहले फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, पेशेंट का हमको कुछ अगर मेडिकल लीगल केस है पहले वो देना है, पैसे नहीं है तो हम ट्रीटमेंट नहीं देना. ऐसे बोले तो वो अलग उनका पर्सनालिटी क्या है पता चलता है. अगर वो बताए पहले इमरजेंसी सिचुएशन है, फर्स्ट वी हैव टू मैनेज, गिव द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, देन वी विल गो फॉर द that fees, पैसे भरना, अदर प्रोसीजर्स, ऐसे आंसर दिए तो बेस्ड ऑन हिज आंसर्स दिस प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट we know that his personality क्या है. So that is the concept of this projective and objective personality test. अगर अभी थोड़ा आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है ये पर्सनालिटी टेस्ट. हेलो हेलो. ये अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये पर्सनालिटी टेस्ट भी कर लेते. पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए दो टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट. ये टेस्ट कैसे भी ले सकते हैं, ये डिपेंड है. ये इंटरव्यू के जैसे भी ले सकते हैं, फेस टू फेस भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स. बट पर्सनालिटी शुड बी चेक्ड बाय दिस टाइप ऑफ टेस्ट. दैट इज द कॉन्सेप्ट. समझ में आ गए? हेलो, इफ यू हाँ अंडरस्टैंड. सर. हाँ, समझ हाँ में आए तो यस बोलो, नहीं तो नहीं बोलो. सो आई कैन एक्सप्लेन इन अदर वे. और आपको समझ में नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम क्या है वो भी पता है. यस सर, नो प्लीज रेस्पॉन्स. सो आइडिया आ गया आपको. सो इन दिस क्वेश्चन द बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. सो इस पे मैंने क्या बोला आपको, अगर यही क्वेश्चन में if they have given achievement and aptitude test are designed to measure typical behavior and characteristic of a examinees, अगर ऐसे सेंटेंस दिया होता तो स्टेटमेंट 1 में, सो वेदर दैट इज ट्रू और फॉल्स वो पूछ रहे हैं हम. अगर स्टेटमेंट 1 में ऐसा दिया तो
whether it is true or false. Correct है wrong होता है? Just read. Achievement and aptitude test designed to assess the measure of the typical behavior and characteristic of the examinee. So if statement 1 में ये लिखा होता तो whether statement 1 is correct or false. स्टेटमेंट दोनों चेंज किया तो रॉन्ग होता है, करेक्ट होता है? समझ में आने आ रहा है मेरा क्वेश्चन आपको? सो if statement 1 is correct, statement 2 is also correct. If you interchange the concept of statement 1 को statement 2 में, statement 2 का concept statement 1 में किया है तो क्या होगा? Both are incorrect. Both statement and 1 and statement are incorrect होता है. समझ में आ गया? क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकते हो लोग. इधर क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने करेक्ट आंसर डाल दिया. अगर स्टेटमेंट 1 का कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट 1 में दिया, स्टेटमेंट 1 का ये इसमें दिया, तो तब आपका ऑप्शन होता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. अभी आपको समझ में आ गए? Yes, sir. अभी इसका आंसर ये है, ये वाला, both statement 1 and statement 2, because achievement and aptitude test are designed to examine the knowledge and abilities. Statement 2 क्या बोलता है? Objective personality and projective personality measure the behavior personality. So both are correct. इसलिए हमारा ऑप्शन होता है both statement 1 and 2 are correct. अगर वो लोग यही स्टेटमेंट को रिवर्स करके अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द पर्सनालिटी, objective personality and projective personality are designed to check the knowledge, ऐसा स्टेटमेंट दिया होता तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 both are incorrect. That is the correct option, that condition. अभी आपको समझ में आ गए? सो आपको कॉन्सेप्ट पता हुआ तो आप आंसर कर सकते हैं इस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपको अचीवमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट क्या है पता नहीं है तो यू आर अनेबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Next concept, today we will start the new concept, choice based credit system. So choice based credit system is given by the University Grant Commission. UGC का एक ड्राफ्ट हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. सो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है ये आज हम लर्न करेंगे. सो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, व्हाई दिस कॉन्सेप्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूजीसी. द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज ब्रॉट आउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी. ये मैटर आपको पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गए हैं टू रिफॉर्म इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम. यूजीसी हैज अर्लियर आस्क्ड फॉर active participation, already initiating several steps to bring the equity, efficiency, academic excellence in the national higher education system. NEP इसलिए लाया है सो एफिशिएंसी, इक्विटी एंड एकेडमिक एक्सेलेंस को बढ़ाने के लिए. मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैव एंटर रिसेंटली इनटू द सेमेस्टर सिस्टम टू मैच द इंटरनेशनल एजुकेशन पैटर्न. सेमेस्टर सिस्टम के लिए ये प्रमोट करता है न्यू एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में. देयर इज अ नीड टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम so that student, depending upon their interest and aims, can choose the interdisciplinary and skill based courses. It is only possible when choice based credit system and internationally knockout system is adopted. So choice based credit system not only offers opportunities and avenues to learn core subject but also explore additional avenues of learning beyond the core subject for holistic development of an individual. क्या है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? यूजीसी ने क्यों बोला है? सो स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है एंड बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट दे कैन चूज द डिफरेंट सब्जेक्ट, interdisciplinary, intradisciplinary and skill based courses.
and it should be matched with international standards, internationally acknowledged. Agar I will give example in next subsequent slides, then you will understand. Then it also helps the, or it also gives the opportunity to learn 4 subjects plus additional subjects plus some skill subjects also the learner may learn. It is learner center. Learner को benefit होने के लिए credit based choice based credit system को यूजीसी ने एक्सप्लेन किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अडॉप्ट किया है. सो दिस इज द टाइप ऑफ इंटीग्रेशन. विद इन सब्जेक्ट एरियाज में हमने कुछ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो इंट्रा डिसिप्लिनरी है. तो बिटवीन सब्जेक्ट एरिया में मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी. बियॉन्ड द सब्जेक्ट एरियाज दैट इज ट्रांस डिसिप्लिनरी. आपको सिर्फ याद होना चाहिए इंटर डिसिप्लिनरी क्या है, इंट्रा डिसिप्लिनरी क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है आपको, बिकॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का उद्देश्य क्या है. इंटरडिसिप्लिनरी, choose the interdisciplinary, intradisciplinary and skill based courses. This is the aim of the this choice based credit system. इसमें समझने के लिए बहुत इजी है. द वर्ड चॉइस, चॉइस का मतलब क्या होता है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चॉइस करते हो. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. क्रेडिट सिस्टम मतलब आपको क्रेडिट और नंबर और वन पर्टिकुलर असाइन देते. फॉर एग्जांपल यू ऑनलाइन में होते हैं ना, अगर कुछ हमने शॉपिंग किया तो यू हैव अर्न 4 क्रेडिट्स 4 पॉइंट्स. सो लाइक दैट क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट देना. तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट, चॉइस बेस्ड मतलब लर्नर को चॉइसिंग के लिए हेल्प है. देन दिस सिस्टम इज नॉट ग्रेड और पर्टिकुलर थिंग्स. It will give the number, that is credits, 2 credits, 4 credits for that particular course or semester. That is the credit system. You will understand step by step. Then the meaning of choice based credit system क्या है. choice based मतलब choice of multiple courses. You know, one at a time you can enroll the multiple courses. इस पे क्या होता है, ग्रेडिंग दिया जाता है A, B, C, D. Then semester system, teacher learner engagement can be measured in a semester wise. Year wise से semester wise के लिए प्रमोट करता है. semester wise टीचर लर्निंग एंगेजमेंट को semester wise evaluation और assessment और credit देते semester wise. Then credit, class hours per week carries the additional importance in the credit system. Class hours, कितना class hour ले रहे per week, that is also comes under the credit. And assessment in the form of classroom attendance, midterm test is continuous and wide ranging. These are the important things. What is mean of the दिस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. इसमें चॉइस के लिए ऑप्शन है, ग्रेडिंग करते हैं मार्क्स को, सेमेस्टर सिस्टम रहता है, क्रेडिट क्लास आवर को भी क्रेडिट देता है. इतना आवर क्लास हो गए दिस वीक में तो दैट आल्सो कवर्स द हेल्प्स इन द क्रेडिट, गिविंग द क्रेडिट इन द दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. देन असेसमेंट इन क्लासरूम अटेंडेंस, देन मिड टर्म टेस्ट आर ऑल इन्वॉल्व इन द असेसमेंट. देन CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या आता है, चॉइस रहता है, सेमेस्टर सिस्टम रहता है, ग्रेडिंग रहता है, क्रेडिट रहता है, देन असेसमेंट. सो चॉइस बेस्ड का मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस ऑफ प्रोग्राम एंड कोर्सेस. चॉइस बेस्ड. देन सेमेस्टर, क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टीचर लर्नर एंगेजमेंट. कितना ड्यूरेशन टीचर लर्नर एंगेज है, दैट इज द सेमेस्टर. असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम अटेंडेंस, मिड टर्म टेस्ट, असाइनमेंट एक्सेट्रा. असेसमेंट हो जाता है. देन क्रेडिट, गिव ड्यू वेटेज इन टर्म्स ऑफ नंबर, इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर वीक. मतलब 3 credits, 2 credits, 4 credits, 30 credits in number form they will give the credits. Then grading, transformation of actual marks secured in the student in terms of a letter grade. For example,
कोई 80 मार्क्स लिया है, कोई 70 मार्क्स लिया है, सो 80% को ए ग्रेड देना है, 70% वाले को बी ग्रेड देना है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल मार्क्स secured by the student in terms of letter grading मतलब ए बी. सो डिफरेंट मेथड्स आर देयर. कैसे डायरेक्ट ग्रेडिंग देना है, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग देना है, वी विल सी इन द लेटर ऑन. जस्ट इसका मतलब क्या होता है, नंबर को लेटर पे कन्वर्ट करना है. मार्क्स कार्ड में क्या करना है, 80 मार्क्स से बदले ए ग्रेड लिखना है, 70 से बी ग्रेड लिखना है. और समटाइम्स इट में आल्सो कवर्स द रेंजेस. फॉर एग्जांपल 70 टू 80 मार्क्स, किस किस का मार्क्स 70 टू 80 है उनको ए ग्रेड देता है. किस किस का मार्क्स 60 टू 70 है, 60 टू 70 है, उनका ग्रेड बी ग्रेड देता है. So it depends whether they consider in between marks. इस पे क्या होता है, 70 मार्क्स वाला भी ये ग्रेड लाता है, 71 मार्क्स वाले को भी ये ग्रेड मिलता है, 79 मार्क्स वाले को भी ये ग्रेड मिलता है, 80 मार्क्स वाले को भी ये ग्रेड मिलता है. सो द रेंज 70 टू 80 कितना भी मार्क्स लिया तो भी वो बच्चे को ग्रेड मिलता है, ये ग्रेड. So this is the grade system. Transformation of actual marks secured by student in terms of letter grades. Another method क्या है, डायरेक्ट नंबर को A ग्रेड B ग्रेड ऐसे भी कर सकते हैं. These are different methods. Concept is transferring the marks in the letter or grade system. Choice-based credit system is essentially implies redefining curriculum into smaller measurable entities or modules with the hours required for studying, learning. These modules primary focus is to combine the modules in different ways as to qualify the certificate, diploma or degree. In sense, therefore, completion of single module of learning can pave the way of learning other modules in same institution or other institution. Combination of modules in keeping with needs and interest of the learners. It is therefore inter and intra-institutional mobility of student is possible. इसका मेन उद्देश्य क्या है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का? जस्ट फॉर एग्जांपल आई विल गिव वन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल. अगर एक साइंस सब्जेक्ट है. साइंस में क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू राइट विद माउस, जस्ट आई विल एक्सप्लेन, इधर आई विल जस्ट सिंबलाइज. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हमने ये कॉम्बिनेशन लिया रहता है. कोई कोई क्या लेता है, पीसीएम लेता है, कोई पीसीबी भी लेता है, कोई क्या लेता है, पीसीबी प्लस अनदर सब्जेक्ट्स रहते हैं वो भी लेता है. कभी कभी पीसीएम प्लस कंप्यूटर साइंस ऐसे लेता है. तो अलग अलग सब्जेक्ट को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लेता था पहले. अभी क्या होगा चॉइस बेस्ड सिस्टम में, क्या होगा, पहले क्या था, अगर पीसीबी ले रहे तो आपको मेडिकल को जाना पड़ता है. अगर आप मेडिकल मैथमेटिक्स ले भी सकते थे, नहीं भी ले सकते थे. तो बट इधर पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो, पीसीएम ले लो, आपको फिजिक्स तो कंपलसरी था, फिजिक्स तो लेना पड़ता था, केमिस्ट्री भी लेना पड़ता था, दोनों तो कॉमन लेना पड़ता. ओनली ऑप्शन नहीं, चॉइस इज फॉर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स. अभी क्या हो रहा है, आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इसके साथ कंप्यूटर साइंस भी आप ले सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. जस्ट फॉर एग्जांपल, एक्चुअली पीयूसी में ये अभी हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट में दिस टाइप ऑफ सिस्टम दे आर डूइंग दिस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फॉर इंटर एंड इंट्रा डिसिप्लिनरी स्टडी के लिए. अभी मैंने बायोलॉजी भी ले सकते, केमिस्ट्री भी ले सकते, उसके साथ कंप्यूटर साइंस भी ले सकते. बायोलॉजी भी ले सकते, केमिस्ट्री भी ले सकते, चाहे तो मैं हिस्ट्री भी ले सकते इसके साथ. कई सी तरफ का भी पॉसिबल वेज को, बट दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक मॉड्यूल बना रहे. मॉड्यूल कहते हैं, मॉड्यूल मीन्स दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल कंटेन्स
20 hours of lecture, 20 hours lecture आवर्स बेस में कंसिडर करते हैं। दिस 20 आवर्स लेक्चर, 20 आवर्स लेक्चर रहते हैं मॉड्यूल 1 में। देन इफ यू कंप्लीट दिस मॉड्यूल आफ्टर द असेसमेंट, आफ्टर दिस मच आवर, दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल हैव द 4 क्रेडिट्स, मॉड्यूल 1। देन मॉड्यूल 2 क्या रहता है, एक कोर्स मॉड्यूल सिस्टम बनाते हो, मॉड्यूल 2, दिस इज मॉड्यूल 2। सो अगर आप मॉड्यूल 2 कंप्लीट किया तो आपको 5 क्रेडिट्स मिलता है। देन इट इज फॉर 30 आवर्स, मॉड्यूल 2 30 आवर्स ड्यूरेशन का है। सो आपने पर्टिकुलर कोर्स एंटर किया, उस पे 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। आपने वो कॉलेज में क्या किया, मॉड्यूल 1 को कंप्लीट किया। मॉड्यूल 1 फॉर एग्जांपल एक्स कॉलेज में आप मॉड्यूल ज्वाइन हुआ, कोर्स को मॉड्यूल 1 कंप्लीट किया, आपका 4 क्रेडिट मिल गया। सो अगर आपको अभी एक्स कॉलेज नहीं चाहिए, आपका ट्रांसफर हो गया, आपका वर्क के हिसाब से कुछ तो प्रॉब्लम आ गया, आपने वो स्टेट और यूनिवर्सिटी छोड़ के आपको दूसरा स्टेट और फॉरेन इवन इंटरनेशनल लेवल पे वो सेम किया, तो आप अगर अमेरिका किधर भी जा रहे हैं, अगर उधर भी वो क्रेडिट सिस्टम सेम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे किया, तो आप आपका सेकेंड मॉड्यूल है ना, ये सेकेंड मॉड्यूल है ना, आप डायरेक्टली जाके उधर अमेरिका में अदर स्टेट में अदर यूनिवर्सिटी में जाके डायरेक्टली मॉड्यूल 2 चालू कर सकते, इफ बोथ इंस्टीट्यूट आर अडॉप्टिंग दिस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। डायरेक्ट मैंने अगर इंडिया में हूँ, मॉड्यूल 1 मेरा कंप्लीट हुआ, कुछ तो रीजन की वजह से मैं फॉरेन जाना पड़ा अमेरिका, देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर दैट कोर्स विथ मॉड्यूल 2 इन दी अमेरिका आल्सो। देन दिस क्रेडिट विल कैरी टू दी दिस इंस्टीट्यूशन। मैंने फिर से मॉड्यूल 1 चालू करने का जरूरत नहीं, मैं आई हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 4 credit. Then if I go to the America and complete the module 2, I will take the 5 credits. Then my total 9 credits are achieved for completion of to certification of that particular course. Certification of that particular course. इससे क्या होगा सीबीसीएस से, it is therefore inter and intra institutional mobility of the students is possible. आपने फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, कोई कोर्सेस में क्या होता है, ये मोबिलिटी नहीं कर सकते। अगर मैंने एक इंस्टीट्यूशन में कोर्स ज्वाइन हुआ तो कंप्लीट होने तक मैं उधर ही रहना पड़ता है, बिकॉज 1 ईयर कोर्स रहता है, फॉर एग्जांपल दैट इज 1 ईयर कोर्स और 1.5 ईयर कोर्स। 1.5 ईयर्स होने के बाद ही फाइनल एग्जाम होते, टोटल 5.5 ईयर्स समझ लो। अगर हमारा बीएमएस में जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा टर्म्स कैसे है, 1.5 अगर मैंने 6 महीने इधर गुजरात में स्टडी किया, बीएमएस ज्वाइन हुआ पर्टिकुलर कॉलेज में, 6 महीने हो गए, मेरा पेरेंट्स का गवर्नमेंट जॉब है, मैं कर्नाटक शिफ्ट हो गए। सो मेरा बीएमएस का स्टडी क्या है, मैं कॉलेज चेंज नहीं कर सकते अप टू 1.5 ईयर, एटलीस्ट मेरा फर्स्ट ईयर का बीएमएस तो खत्म होना पड़ता है, देन ओनली आई कैन टेक द परमिशन ऑफ बोथ गवर्नमेंट। अगर उधर हम कर्नाटक में जाते हैं ना, उधर भी वैकेंसी हुआ तो हम ट्रांसफर ले सकते। सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल हैपन, बट अगर मुझे 6 महीने मैंने इधर गुजरात में स्टडी किया, अगर सीबीसीएस सिस्टम है 6 महीने के लिए इतना क्रेडिट मार्क्स अलॉट किया है, मैंने 6 महीने के बाद उतना क्रेडिट लेके कर्नाटक में जाके नेक्स्ट 6 महीने से मैंने स्टार्ट कर सकते। सो ऑलवेज द टर्म विल बी डिवाइडेड इन दी सेमेस्टर वाइज क्रेडिट देता है दिस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इट विल हेल्पफुल फॉर द मोबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। एक इंस्टीट्यूशन ने अदर इंस्टीट्यूशन जाने के लिए बहुत हेल्पफुल करता है, दैट इज द हेल्पफुल फॉर द लर्नर्स, इट इज एडवांटेज फॉर द लर्नर्स। दिस इज द एग्जांपल, अगर मैंने 6 महीने ज्वाइन किया, एक सेमेस्टर हो गया, उसके लिए पर्टिकुलर क्रेडिट अलॉट करना है कॉलेज को। फॉर एग्जांपल मैंने 6 महीने इधर बीएमएस किया, मुझे टोटल फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए 1.5 ईयर से 3 सेमेस्टर पकड़ो, 6 महीने का, तीनों सेमेस्टर को 5 मार्क्स 5 क्रेडिट अलॉट किया वो लोग। मैंने अगर 6 महीने ये कॉलेज में स्टडी किया, मुझे 5 क्रेडिट्स मिल गया। नेक्स्ट मैंने कर्नाटक में शिफ्ट हुआ, दूसरा एक बीएमएस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते,
सेकेंड सेमेस्टर से मैंने चालू कर सकती हूँ, उधर 5 क्रेडिट चालू होते हैं। नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर भी मैं कंप्लीट करूंगा, टोटल मुझे इधर का 5 उधर का 5 15 क्रेडिट्स मिल गए, तो मेरा फर्स्ट ईयर का बीएमएस कोर्स कंप्लीट हुआ। इस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे इंटर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर। ये कब पॉसिबल हुआ? व्हेन दे हैव अप्लाइड दिस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अगर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम नहीं है तो ये मोबिलिटी करने के लिए प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई दे हैव अप्लाइड दिस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सो अगर कभी कभी क्या होता है, एक सब्जेक्ट से एक कोर्स से अनदर सब्जेक्ट के जंप होने के लिए भी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल पीसीबी पीसीएम, जस्ट फॉर एग्जांपल समझने के लिए बता रहा हूं मैं। पीसीबी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए 555 क्रेडिट दिया है। जस्ट वेट। Just for example, I am taking PCM। फिजिक्स के लिए 5 क्रेडिट है, केमिस्ट्री के लिए 5 क्रेडिट है, मैथमेटिक्स के लिए 5 क्रेडिट है। इधर PCB है, इसके लिए 5 क्रेडिट्स है, इसके लिए 5 क्रेडिट्स है, इसके लिए 5 क्रेडिट्स। ये फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स कंप्लीट करता है, सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री कंप्लीट करता है ये लोग, थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स कंप्लीट करता है। इधर आल्सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर में बायोलॉजी लेते हैं। ये दीज आर 2 कोर्सेस जस्ट फॉर इमेजिनेशन। मैंने क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स स्टडी किया, आई हैव अर्नड 5 क्रेडिट। Then second semester also I have earned, I have cleared the chemistry, then I have earned the 5 credits. मुझे तुरंत थर्ड सेमेस्टर आता है, क्या लगा मुझे मेडिकल करना है, बट आई हैव चूजन दी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया। मैथ बायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर गोइंग दी मेडिकल साइंस। मैंने थर्ड सेमेस्टर आता ही मुझे मेरा मन पे है नहीं मुझे बायोलॉजी लेना था और मैं मेडिकल जाना है। देन यू कैन एंटर द डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर हियर, बायोलॉजी को डायरेक्ट आप एंटर कर सकते हैं। देन इफ यू कंप्लीट दिस सेमेस्टर यू विल गेट द 5 क्रेडिट्स। देन दो पीसीबी कोर्स का सर्टिफाई करने के लिए आपको 15 क्रेडिट आपको मिल गया, 15 क्रेडिट आपको मिल गया। सो यू कैन जंप फ्रॉम वन सब्जेक्ट वन कोर्स टू अनदर कोर्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये कब पॉसिबल हुआ? क्रेडिट, व्हेन क्रेडिट सिस्टम इज फॉलोड देन ओनली दिस। बिकॉज अगर पीसी आप ऑलरेडी स्टडी किया, अगर आपको क्रेडिट नहीं दिया होता तो ये टोटल क्रेडिट आपको बना के एक सर्टिफिकेशन देने को नहीं होता। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। समझ में आ गया आपको क्या है, क्यों कर रहे हैं यूजीसी ने? हेलो हेलो हेलो, जस्ट रिप्लाई Yes, वेदर। sir. ओके, ये कॉन्सेप्चुअली बता रहे हैं मैं आपको समझने के लिए। एक्चुअली इनका माइंड में क्यों है, आगे क्या है, बच्चों को बोल नहीं सकते क्या, लर्नर सेंटर्ड है स्टूडेंट के लिए। अगर देखो मैंने फिजिक्स भी पढ़ा केमिस्ट्री भी पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर आता है मेरा मन पे आ गया अरे बायोलॉजी, तो मुझे फिर से ये दोनों सेमेस्टर का पढ़ाई हुआ कैंसिल कर से फिर से एक बार मैंने पीसीबी कोर्स ज्वाइन करना होता तो क्या होता, मेरा ये 5 दोनों सेमेस्टर का टाइम ड्यूरेशन खराब होता था। मैंने पीसीएम का कोर्स लिया, 2 सेमेस्टर हो गया, लेकिन पीसीएम से तो मेडिकल ज्वाइन नहीं कर सकते। देन पीसीएम का कोर्स छोड़ के देन वंस अगेन आई कैन ज्वाइन दी पीसीबी। 2 सेमेस्टर का टाइम ड्यूरेशन खराब होता था। अगर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम किया तो पीसी का
सेमेस्टर का क्रेडिट मिल गया, सिर्फ बायोलॉजी का कोर्स का क्रेडिट आप कर लो, देन यू विल गेट दिस सर्टिफिकेशन ऑफ पीसीबी. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. सो इतना समझ गए तो उसका बिहाइंड रीजन क्या है चॉइस बेस्ड. बट सर्टन यूनिवर्सिटीज सर्टन यूजी कोर्सेस में ये अभी अप्लाई कर रहे हैं. Why this is they are doing this? यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस दी ऑल इंस्टीट्यूशन ऑल कोर्स के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, लर्नर्स को हेल्प होने के लिए ये सारे चीजें कर रहे हैं. हेल्पफुल है ये. लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, ये सारे चीजें इम्प्लीकेशन होने के लिए, अप्लाई होने के लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आर देयर. टीचर्स को भी आइडिया होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को भी ट्रेनिंग देना पड़ता है ये सारे चीज के लिए. सो दीज आर प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होगा. बट these are national education policy में these points are they have mentioned. ये one or other day होने वाला है, that is the our education system में change होने वाला है. but these are concept, वो आपको आगे पता होना चाहिए what is choice based credit system. आइडिया आ गया आपको choice based credit system क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आना इंपॉर्टेंट है. देन सीबीसीएस, CBCS is a mother of learner centric educational forms. ये CBCS करने से, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लाने से किसको ज्यादा फायदा हो रहा है, लर्नर को. यू कैन चेंज द कोर्सेस इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, और यू कैन चेंज द इंस्टीट्यूशन. लर्नर के लिए बेनिफिट है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ लर्नर सेंट्रिक एजुकेशनल रिफॉर्मर्स. सो रिमेंबर मदर ऑफ लर्नर सेंट्रिक, बिकॉज लर्नर को कोई भी तरह का फैसिलिटी दे रहे हैं सीबीसीएस से, मैक्सिमम फायदे होने वाला किसका है, लर्नर्स को, इंस्टीट्यूशन को नहीं. अगर इंस्टीट्यूशन 6 महीने में एक स्टूडेंट उनका इंस्टीट्यूशन में पढ़ के उनको प्रोविजन है दूसरा इंस्टीट्यूशन जाने के लिए, इट इज लॉस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट इट इज beneficial for learner. So that's why CBCS is mother of learner centric educational forms कहता है. In grading system is considered to be better than the conventional mark system, hence it has been followed in the top institution in India and abroad. So it is desirable to introduce the uniform grading system. Uniform grading system, एक grading system से क्या होता है, conventional mark system से grading system is better. Why better? I will explain in the next slide. This will facilitate student mobility across the institution, within the countries, across the countries, enable potential employers to assess the performance student, brings desired uniformity. Grading system method of computing the CGPA cumulative point कैसे ये करना है एग्जामिनेशन के, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. दिस विल फैसिलिटेट स्टूडेंट मोबिलिटी विद इन दी एंड अक्रॉस द कंट्रीज. Then the potential to assess the performance of the student, desired uniformity in the education system. Student enjoys the extraordinary benefit, that is his evaluation would be in terms of grade, computing through more scientific logical process normalization, which imbies the disadvantage of relative advertisement of performance against in the evaluating absolute method. National Assessment and Accreditation, NAC, National Assessment and Accreditation Council, additionally use the extraordinary significance finding of the whether choice-based credit system is set up in a random foundation while surveying it. NAC का बारे में आपको पता है, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिट काउंसिल, ये हर एक इंस्टीट्यूशन को एक ग्रेडिंग देता है. NAC A++, NAC B, NAC C, ऐसे ग्रेडिंग देता है. एक ग्रेडिंग देने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, उसमें रिसर्च कितना हो रहा है, कितना पीएचडी स्टूडेंट है, कितना पीजी स्टूडेंट है, वो सर्टन क्राइटेरियाज आर देयर. इफ दे आर फुलफिलिंग दैट क्राइटेरिया, इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन हाउ मच क्राइटेरिया दे आर फुलफिलिंग, बेस्ड ऑन दैट दे विल गिव द A+, B+, देयर आर ऑलमोस्ट 3 ग्रेड्स है NAC का. NAC A+ है मतलब क्या है, सारे क्राइटेरिया दैट इंस्टीट्यूशन में प्रेजेंट है. NAC का क्या क्या चाहिए क्राइटेरिया, वो सारे चीजें, वेदर द इंस्टीट्यूशन इज पेइंग यूनिवर्सिटी स्केल, दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया इन द NAC. अगर आपको NAC में होना चाहिए, सो प्रिस्क्राइब्ड सैलरी शुड बी गिवन, दे रहे नहीं दे रहे,
अदर फैसिलिटी नहीं दे रहे, रिसर्च कितना हो रहे हैं, न्यूअर टेक्नोलॉजी कितना अडॉप्ट कर रहे हैं कॉलेज में, रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस कैसे, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है नैक। सो बेस्ड ऑन दैट दे विल गिव द ए बी सी। अगर कॉलेज ए प्लस ले रहे, सो दैट इज all the criteria are meant in the that institution. अगर B ले रहे, some criteria are not meant, that's why they given the B. So recently NAC also giving the importance for choice based credit system. अगर कोई institution और university choice based credit system को follow करने का, implement करने का तैयार कर रहे, that will also give the weightage for the while giving the grading. NAC will also consider this CBCS system in the universities. देन हियर सीबीसीएस में क्या होता है, एकेडमिक ईयर का कंसेप्ट क्या है, एकेडमिक ईयर कंटेंट्स 2 consecutive semester, 2 semester is equivalent to 1 academic year according to this CBCS. 1 academic year is 2 consecutive semester, इस पे 1 odd आता है, 1 P1 आता है. And choice based credit system provides choice for students select from prescribed courses. इसमें सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है. वन इज कोर सब्जेक्ट, दैट इज मेन सब्जेक्ट, देन elective subject, then minor or soft skill courses. He can choose the one on core subject तो compulsory रहता है that particular course. Then he can take elective subject, then he can take the certain minor or soft skill courses also he can combine with this core subject. That is the concept of choice-based credit system. Course, usually referred to as a papers, is a component of a program. A course may be designed to comprise lecture, tutorials, laboratory work, activities, project work, vocational training, viva. These all things contains the course. Course इसको कहते हैं हम. That is the course. Then credit-based system requirement is awarding of a degree, diploma, certificate is in terms of number of credits to be completed by the student. Particular course complete किया आपने, that course should be prescribed in terms of credits, that is 4 credits, 40 credits, based on the content, duration and importance of the course. They will give the credit number. Credit point is the product of grade point and number of credit of a credit of that course. Grade point क्या है, then number of credit for that course. Both together we called as a credit point. What is the credit point, how to calculate, we will see in the next class. Just listen, don't worry, just concept आपको समझ में आना है. Letter grades and grade points. The semester grade points, SGAP, semester grade points and cumulative grade points. What are the semester grade points and cumulative grade points? Semester grade points मतलब क्या है, particular semester में, for example फर्स्ट सेमेस्टर में कितना ग्रेड्स लिया है, that is the semester grade points. सेकेंड सेमेस्टर में कितना ग्रेड्स लिया है, that is सेकेंड सेमेस्टर. थर्ड सेमेस्टर में कितना ग्रेड्स लिया है, that is third semester. These are letter grades, grade points in the different semester. If you take the average, you add the plus first semester, second semester and third semester and you will divide it with 3. That is the taking the average of semester grade point assessment. Average, sorry, SGPA means semester grade point average. A means average is adding divided by total number of semester, that is the average, is based on the grades of current term, while cumulative is based on grades in all courses taken after joining the program of the study. You will see in the table, then you will understand. Higher educational institution may also mention marks obtained in each course and a weighted average marks based on the marks obtained in all semester taken together for the benefit of the student. मार्क्स भी मेंशन करना है, ईच कोर्स में क्या क्या लिया है, एंड वेटेड एवरेज ऑफ मार्क्स बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल सेमेस्टर कैन टेकन टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट, ये भी मेंशन करना है. सो दिस इज द ग्रेड पॉइंट. ग्रेड पॉइंट मतलब क्या है, इट इज ए न्यूमेरिकल वेट अलॉटेड टू ईच लेटर ग्रेड on a
10-point scale. Letter grade मतलब क्या है? It is an index of performance of student in a said course. Grades are denoted by the letter O, A plus, A, B plus, C. वो लेटर ग्रेड किया तो क्या है? इनका ग्रेड पॉइंट था 10. अगर 10 ग्रेड पॉइंट मिला है इनको, देन यू कैन गिव द लेटर ग्रेड वो आउटस्टैंडिंग. वो मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है. अगर ग्रेड पॉइंट नहीं 9 है, ग्रेड पॉइंट 9 है, देन इट इज A प्लस, एक्सलेंट. ग्रेड पॉइंट 8 है, इट इज वेरी गुड. इट इज बेस्ड ऑन 10 ग्रेड पॉइंट. दैट इज 10 पॉइंट स्केल में हमने ग्रेड करे. 10 पॉइंट स्केल, 10 पॉइंट स्केल में हमने ग्रेड किया तो 10 का मतलब क्या होता है? वो. दैट इज द ग्रेड सिस्टम. एंड इवन इफ ग्रेड पॉइंट 0 आ गया, when we will give the grade point 0, then you can write the F fail or he is absent in the exam. Then letter grade you have to mention. अगर कोई बच्चे एग्जाम में नहीं बैठे that particular semester, then the grade point should be given 0. and letter में letter grade क्या होता है? absent. अगर बच्चे फेल हुआ है, फेल हुआ मतलब इतना मार्क्स लिया नहीं लिखना रहते उनको. फॉर एग्जाम्पल 50 मार्क के लिए 35 मार्क्स लेना रहते पास के लिए. अगर वो 30 मार्क्स लिया है, यू हैव टू मेंशन दैट ग्रेड पॉइंट एज ए 0 नॉट 30, एंड यू हैव टू गिव द लेटर ग्रेड फेल. दैट इज द कॉन्सेप्ट. बट इफ स्टूडेंट फेल्स एंड absent, then the credit will be not given. अगर फेल हो गए, absent हो गए, the credit will be not given. But whether you are outstanding A plus, A, B plus, C, just pass. If all of these person get the course credit as a same pi per X course hai. If these persons complete the course, whether he is outstanding, excellent, all will get the credit same pi, because the allotted course ka credit point kitna hai? 5. That's why they give the credit point. They will give the grade आउटस्टैंडिंग. बिकॉज मैं भी एक कोर्स कंप्लीट किया तो मुझे भी क्रेडिट 5 आता है, आपको भी 5 आते हैं, हर एक को 5 मिलता है. सो उसका परफॉर्मेंस क्या है वो समझने के लिए हमको ये लिखना पड़ता है. ओ दैट ग्रेड, दिस इज क्रेडिट स्कोर फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोर्स. दिस इज द लेटर ग्रेड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है. If you see certain certificate, then you will understand. I will show if possible the certain certificate, then you come to know what is this credit and letter grade. CBSE में क्या होता है ग्रेडिंग सिस्टम? सी 91 to 100 ग्रेडिंग क्या होता है? A प्लस. 81 to 90 मार्क्स लिया वाले को A2. दिस इज द सेकेंडरी स्टेज क्लास के लिए CBSE ने ग्रेडिंग पॉइंट अडॉप्ट किया है. दैट इज द मार्क्स रेंज. अगर 100 मार्क्स में 91 to 100 लिया, उनको A प्लस A1 ग्रेड लेना है, 91 to 90 लेना है, A2 देना है, 72. दिस इज देयर स्केल. बेस्ड ऑन दिस they will give the grading system in CBSE. देन सेमेस्टर. सेमेस्टर का मतलब क्या है? ईच सेमेस्टर विल कंसिस्ट ऑफ 15 to 18 वीक्स ऑफ एकेडमिक वर्क इक्विवेलेंट टू 19 एक्चुअल टीचिंग डेज. ये 19 एक्चुअल डेज है ना, 19 डेज ऑफ टीचिंग होना है उस पे. 90 टीचिंग डेज होना है, तभी उसको सेमेस्टर कह सकते हैं. अगर 90 डेज नहीं हुआ वो सेमेस्टर में एक्चुअल टीचिंग वर्क, then it is not considered as a semester. Academic में कितना होना चाहिए? 1 academic is equal to 2 semester. So on academic में 180 डेज का टीचिंग होना चाहिए. इसका हाफ 90 डेज is considered as a semester. That's why 90 days का teaching days होना चाहिए. Then only it will called as semester. The semester में भी start from July to December एक semester रहता है. इसको हमने ऑड सेमेस्टर कहते हैं. ऑड मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. देन इवन सेमेस्टर मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. 6 प्लस इसको फर्स्ट जुलाई टू दिसंबर वाले को हमने ऑड सेमेस्टर बोलता है. देन इवन सेमेस्टर इज जनवरी टू जून. दैट इज द odd and even. You have to remember odd semester is July to December, even semester is from January to June. So SGPA कैसे कैलकुलेट करता है? कोर्स 1 में फॉर एग्जांपल
प्लीज लिसन, जस्ट वेरी सिंपल है, लेकिन आपको चार्ट देख के कंफ्यूजन होता है. आई विल एक्सप्लेन वेरी सिंपल. सेमेस्टर 1 में 6 कोर्स है. कोर्स 1 में 3 क्रेडिट पॉइंट है. दे हैव अलॉटेड दिस पर्टिकुलर कोर्स को 3 क्रेडिट दिया है. 3 क्रेडिट एंड लेटर ग्रेड ये है. ग्रेड पॉइंट 8 है. देन क्रेडिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है हमको. क्रेडिट, इधर एक कैलकुलेशन दे. क्रेडिट इंटू ग्रेड. क्रेडिट कितना है 3 इंटू ग्रेड. ग्रेड कितना है 8, 24. कोर्स 2 को कितना है. क्रेडिट 4, ग्रेड पॉइंट 7. कोर्स 3 this total 20. So you have to add these all credit point. 139 divided by 20 total credits. So obtained credit points divided by total credit points. Total credit points. So obtain कितना होता है 139. ये क्रेडिट पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने. एक्चुअल क्रेडिट कितना है एंड ग्रेड कितना है, दोनों इंटू किया तो हमको क्रेडिट पॉइंट मिलता है. इफ यू ऐड ऑल दिस क्रेडिट पॉइंट्स that is 139. If you add all actual credits given for these 6 courses, that is 20. If you divide this 139 by 20, then you will get the SGPA, semester grade point average. It is for first semester. This is for first semester. फर्स्ट सेमेस्टर में इतना 6 कोर्स है. सो इनडायरेक्टली क्या होगा. फर्स्ट सेमेस्टर इज 20 क्रेडिट. अगर फर्स्ट सेमेस्टर आपको कंप्लीट किया तो आपको 20 क्रेडिट्स है. सो एसजीपीए क्या है. इट इज एवरेज ऑफ ऑल द कोर्सेस प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेमेस्टर. दैट इज दिस इज द फर्स्ट सेमेस्टर का एसजीपीए 6.95. समझ में आ गया आपको. If you see the once again, you will understand this is very simple but somewhat difficult in first time क्योंकि we are not familiar with these things. क्या है सेमेस्टर. कीवर्ड क्या है. सेमेस्टर में 6 कोर्स है. एवरी कोर्स के लिए सर्टेन क्रेडिट पॉइंट दिया है. व्हाट दे टेकन ग्रेड पॉइंट के हिसाब से वो लोग असेसमेंट करके लिखता है. सो अगर क्रेडिट पॉइंट करना है तो वॉट एवर एक्चुअल क्रेडिट फॉर दैट कोर्स and what the person has taken that grade point, that should be multiplied and all multiplied. every credit point को add करना है divided by total credit से divide किया तो that is the semester for first semester. Segregate grade point average. Average is nothing but sum divided by number. That is the SGPA. Then what is cumulative. I say first semester, second semester, third semester, फोर्थ सेमेस्टर. इसका सारे क्रेडिट्स हमने लेके उसका एवरेज लिया तो दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव मंथ्स प्लस क्या. क्यूमुलेट का मतलब होता है ऐड करते जाना है. क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट क्या है. इट इज ए मेजर ऑफ ओवरऑल क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ओवर ऑल सेमेस्टर. इट इज ए रेशियो ऑफ टोटल क्रेडिट्स पॉइंट्स secured by a student in various courses in all semesters. Sum total of credits for all courses in the that semester. So semester 1 में क्रेडिट 21 लिया है, 22 लिया है. सो इट इज दी जस्ट इफ एग्जाम्पल फॉर दिस इज क्रेडिट 21. एसजीपीए क्या है 6.91. इधर लिया ना 6.9. जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का एसजीपीए मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर का एवरेज है. क्रेडिट कितना था 21. ऐसे सेमेस्टर 2 में उनका एसजीपीए क्या है 7.8. क्रेडिट्स कितना था टोटल 22. ऐसे हर एक सेमेस्टर का एसजीपीए एंड क्रेडिट हमको लेना है. नेक्स्ट वी विल क्रेडिट पॉइंट प्लस एक्चुअली एसजीपीए कितना लिए मल्टीप्लाई प्लस एड ऑन एंड डिवाइडेड बाय द टोटल दिस क्रेडिट्स. इफ यू सी दिस this formula is there. Sum of
what this credits and semester grade points divided by sum of all credit points. That is the formula for CGPA. Here also you can see it is the ratio of total credit points secured by a student in a various courses in all semester and the sum of total credits of the all semester. That is the if you go through the, if you see this exact example, then you will come to understand. Then it should be expressed within the 2 decimal places. It is 2 decimal places only, 10, 11, 13 like that. 2 decimal places के लिए ये लिमिट है. 1 more than 2 decimal places में नहीं लिख सकते. That is the concept. अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी. जस्ट एसजीपीए क्या है, सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट का एवरेज है. क्यूमुलेटिव क्या है, ऑल सेमेस्टर का ऐड करके हमने एवरेज लिया, तो दैट इज क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज. इफ यू नो दिस मच, दैट इज आल्सो सफिशिएंट. ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट मतलब क्या है, बेस्ड ऑन अबव रिकमेंडेड लेटर ग्रेड्स, ग्रेड पॉइंट्स, एसजीपीए, सीजीपीए, द सर्टिफिकेट देना है स्टूडेंट्स को. बेस्ड ऑन ग्रेड्स अर्न, ग्रेड सर्टिफिकेट शाल यूज्ड टू ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट आफ्टर एवरी सेमेस्टर. ईच एंड एवरी सेमेस्टर के बाद उसको सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेड कार्ड देना है. सेमेस्टर के बाद इतना ग्रेड लिया है, इतना क्रेडिट अर्न किया है, ये सारे डिटेल्स वो सर्टिफिकेट में होना चाहिए. कोड, title, number of credits, grade secured along with SGPA of that semester and CGPA earned till that semester. Because if that particular institute give these all things mentioned in the certificate, and that certificate should be given in the every semester, then only the student can move from one institution to another institution. ये सारे चीजें इंफॉर्मेशन वो सर्टिफिकेट में मेंशन करना है वो इंस्टीट्यूशन को. कोड, टाइटल, नंबर ऑफ क्रेडिट्स, ग्रेड सेक्यूर्ड along with SGPA and CGPA earned in the that semester. For example, मैंने semester 1, semester 2 एक particular कॉलेज में किया, मुझे आगे का सेमेस्टर दूसरा कॉलेज के लिए शिफ्ट हो रहा है, तो द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन शुड गिव दी ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 का कार्ड, ग्रेड कार्ड मुझे वो लोग देना चाहिए. बेस्ड ऑन दैट ओनली, अगर मेरा 3rd, 4th, 5th, 6th अलग इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, दे विल कंसीडर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 का प्रीवियस इंस्टीट्यूशन एंड दिस कंटिन्यूइंग इंस्टीट्यूशन दे विल गिव द अल्टीमेट डिग्री और कोर्स टू मी. दैट इज द कॉन्सेप्ट. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सीबीसीएस क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का फीचर्स क्या है? एनहांस लर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द लर्नर्स, मैच द लर्नर्स स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज एंड एस्पिरेंट्स, इंटर इंस्टीट्यूशन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लर्नर्स, and part completion of academic program in the institution of enrollment and part completion in a specialized institution. मतलब half of हमने academic program को कर सकते हैं because of CBCS. Then improvement in educational quality and excellence, flexibility for working learners to complete the program over an extended period of time. Flexibility मिलता है, अगर कोई learners working है, then he can also finish that particular course. ये कैसे अचीव होता है, we don't know because we are not specialist, educational specialist. Based on expert opinion, ये सारे features है. These are the features if you applied the CBCS system in the undergraduate. That is the concept of CBCS, standardization and compatibility of educational programs across the country and global scenario. इधर का कोर्सेस भी सेम होता है, अगर फॉरेन में भी जाए तो भी एवरीवेयर द एजुकेशनल सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम विल बी सेम. कंपेयर कर सकते हैं. हमारा सेकेंड पीयूसी का अगर हमने क्रेडिट बेस्ड सिस्टम किया तो फॉरेन का सेकेंड ईयर को भी हम कंपेयर कर सकते हैं इफ द क्रेडिट बेस्ड सिस्टम इज अप्लाइड. And following are the main advantage. Advantages क्या है? Teaching and learning process is shifting from teacher centric to learner centric. Learner के लिए important है learner centric तरह shift हो रहा है. All activities are taken into account, not only the time of learners, lecture, seminar, but also time they need for individual learning and preparation of examination. Learning is self-paced and self-directed. इस पे सेल्फ बेस्ड एंड सेल्फ डायरेक्टेड होता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर इधर किया, सेकेंड सेमेस्टर दूसरे तरफ किया और मैं सब्जेक्ट चेंज कर दिया. सो दिस इज मोर टुवर्ड्स लर्नर इज सेल्फ फेसिंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड because the major shifting from teacher centric to learner centric. Why? Because these CBCS is working higher education, not secondary or primary education. This is higher education.
हायर एजुकेशन में ये करने वाला है। हायर एजुकेशन में क्या रहते हैं? अडल्ट्स, अडल्ट्स के लिए है हायर एजुकेशन, अडल्ट्स लर्नर्स आर देयर। सो रिसर्च साइंस डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल कोई कोई साइंटिस्ट इनोवेशन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांच को पढ़ाना पड़ता है, करना पड़ता है। इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव मेड द CBCS. Learners may undertake as many credits they can cope with without having to repeat all the course in the given semester. As I explained, फिर से दूसरा कॉलेज में गए तो वो सेमेस्टर रिपीट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर कैरिंग द क्रेडिट इन द already. If they taken the course in different institution also, they are carrying the credit from the previous semester. Offered more flexibility to learner, allow them to choose interdisciplinary courses, change मेजर्स मतलब मेजर सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को भी चेंज करने को हेल्प होता है। रेस्पेक्ट लर्नर ऑटोनॉमी, लर्नर्स ऑटोनॉमी मतलब लर्नर का डिसीजन के लिए रेस्पेक्ट देता है। इट अलाउस लर्नर्स टू चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन लर्निंग नीड्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स। लर्नर मोबिलिटी, opportunities to study different times and different places, beneficial for achieving more transparency and compatibility between the different educational sites. अगर मैंने फर्स्ट BAMS कोर्स को कोई कॉलेज में ज्वाइन हुआ, मुझे 1 साल के बाद और 2 सेमेस्टर के बाद पता चला दिस इंस्टीट्यूशन में पेशेंट नहीं है, आगे में नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मेरा कोर्स क्या है वो अच्छा नहीं चल पाएगा, वैसा समझ में आ गया तो यू कैन चेंज दी अच्छे वाले इंस्टीट्यूशन को आप शिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज दी इट हेल्प्स द लर्नर मोबिलिटी, इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। वही BMS कोर्स आप दूसरा इंस्टीट्यूशन में कंटिन्यू कर सकते हैं। Hypothetically, if this CBCS system is also incorporated in the all the these professional courses also, then only it is possible, otherwise not. That is just for idea example. Beneficial for achieving more transparency and compatibility between the different educational structure. डिसएडवांटेज क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBCS हैज सम प्रैक्टिकल रेस्ट्रिक्शन, प्रैक्टिकली बहुत रेस्ट्रिक्शन होता है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का टीचर मिलना, कॉम्बिनेशन करना, उसका एवेल्यूएशन करना, इट इज कॉम्प्लिकेटेड पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट टू लैक ऑफ एजुकेटर्स एंड फाउंडेशंस। इंस्टीट्यूशन को एजुकेटर्स और लैक है हमारे पास एकदम। मैंने PCB एकदम साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया तो साइकोलॉजी का टीचर किधर रहता है हमारा इंस्टीट्यूशन में? So it is complicated. It needs more punctuality from the student because it is learner center. अगर student punctuality नहीं है, this system will not successful because इधर teacher से ज्यादा learners का हाथ में। उनका मन लगे तो मैथमेटिक्स ले सकते हैं, नहीं तो बायोलॉजी को भी शिफ्ट हो सकते हैं। It is that's why the punctuality of student is important. Students can have just halfway learned any new subject pick up by the student as a additional credit. अगर इसका डिसएडवांटेज ये भी है, अगर कुछ सेमेस्टर में पढ़ के दूसरा सिस्टम में वो गए तो हाफ स्टडी हो गया आपको इस दैट सब्जेक्ट में। दैट इज आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज, हाफ लर्न any new subject picked by the student as a additional credit subject because it allows subject to subject change करने के लिए अलाउ है। आप ये सेमेस्टर में हाफ सिलेबस कंप्लीट किया, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो दैट लीड्स टू द हाफ नॉलेज, half subject. That is also one of the disadvantage. Number of courses are forced in CBCS, which is an overburden for the student as well as educator. It may be burden, कैसे भी चॉइस कर सकते, कुछ भी कर सकते हो। स्टूडेंट के लिए भी बर्डन है, टीचर्स को भी बर्डन है। Then shortage of framework offices, example building, research center offices influences the CBSE. These are all disadvantages CBSE implement होने के लिए, but they have proposed CBCS in the national education policy. होता है initially some institution they will implement this thing, then gradually हो सकता है, but these are the concept regarding the CBCS. So one question, which among the following is best advantage of choice based credit system? क्या है बेस्ट, which among the following is best advantages of choice based credit system? Option 1, shift in focus from teacher centric to student centric, improving the classroom attendance, helping teacher to complete syllabus on time, reducing the examination anxiety among the student. इस चारों ऑप्शन में एडवांटेज, बेस्ट एडवांटेज कौन सा है?
सीबीसीएस अगर लागू हुआ तो सीबीसीएस अगर हमने अप्लाई किया तो एडवांटेज क्या है सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में एडवांटेज क्या है विच ऑप्शन इज करेक्ट हेलो हेलो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लाने से क्या एडवांटेज है क्या व्हाट इज द एडवांटेज क्लासरूम का अटेंडेंस बढ़ता है टीचर को सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम मिलता है एग्जाम में का एंजाइटी कम होता है और शिफ्ट एंड फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक इन एजुकेशन क्या है इसका ऑप्शन Option 1. एंड वन एनी अदर प्लीज पार्टिसिपेट ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एनीवन सीबीसीएस लाने से क्या होता है इधर फॉलोइंग आर एडवांटेजेस इसमें पढ़ाई किया ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज शिफ्टिंग फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन लाने के लिए सीबीसीएस हेल्प करता है क्वेश्चन क्या है which among the following is best advantages of choice based credit system shift from focus from teacher centric to student centric education समझ में आ गया आपको ये क्लासरूम अटेंडेंस बढ़ाने के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का क्या रोल है क्लासरूम अटेंडेंस तो कौन सा सिस्टम में भी होता है ये स्पेशली नॉट फॉर दिस क्लासरूम अटेंडेंस के लिए तो नहीं हेल्पिंग टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम ये तो चॉइस बेस्ड हो ईयर वाइज हो सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन एंजाइटी एंजाइटी तो कौन सा सिस्टम भी कहता है एंजाइटी थोड़ा रहता है स्टूडेंट में लेकिन मेजर फोकस क्या है टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक करने के लिए सीबीसीएस हेल्प करता है दैट इज द करेक्ट आंसर देन आउटलाइन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इस पे क्या होता है कोर्स टाइप में क्या होता है वन कोर सब्जेक्ट रहता है कोर मतलब इंपॉर्टेंट और मेन कोर्स रहता है उसके साथ इलेक्टिव कोर्सेस एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस दीज आर दी आउटलाइन ऑफ दिस सीबीसीएस सीबीसीएस में एक कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है कोर सब्जेक्ट क्या है दीज आर मेन सब्जेक्ट देन इलेक्टिव मतलब that is related to discipline centric elective or general elective and one project should be taken dissertation or project that is the elective courses then ability enhancement courses one is compulsory that is theory related is compulsory this is practical skill enhancement another one is contain this ability enhancement courses we will see one by one कोर कोर्सेज का मतलब क्या है आउटलाइन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ए कोर्स विच शुड बी स्टडीड कंपल्सरी बाय अ कैंडिडेट एज ए कोर रिक्वायरमेंट इज टर्म्ड एज ए कोर कोर्स अगर हमको फिजिक्स का यूजी कर रहे हैं मैं फिजिक्स में डिग्री लेने के लिए देन फिजिक्स इज ए कोर कोर्स दैट इज द कोर कोर्स और कोर्स सब्जेक्ट हो जाता है देन इलेक्टिव कोर्स क्या है फिजिक्स के रिलेटेड अगर कुछ एस्ट्रोनॉमी अगर कुछ कोर्स इलेक्टिव सब्जेक्ट ले रहे हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव डिसिप्लिन को हमने फिजिक्स के रिलेटेड कुछ इलेक्टिव ले रहे दैट इज डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स अगर फिजिक्स छोड़ के दूसरा कुछ जनरल ले रहे मॉरल वैल्यूज ऐसे अनरिलेटेड टू डिसिप्लिन मेरा कोर्स सब्जेक्ट है फिजिक्स बट आई एम टेकिंग जनरल इलेक्टिव फॉर एग्जांपल मॉरल वैल्यूज इन लाइफ ऐसे वाला हमने कोर्स एक इलेक्टिव चॉइस किया दैट इज जनरल इलेक्टिव डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव मतलब अगर फिजिक्स मेरा कोर कोर्स है मैंने एस्ट्रोनॉमी का बारे में और अलग रिलेटेड टू फिजिक्स डिसिप्लिन में है लेकिन वो हेल्प करता है मेरा कोर्स सब्जेक्ट को दैट इज द डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स देन एक डिसर्टेशन एक प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा प्रोजेक्ट करके
दिखाना रहता है, दैट इज डिसर्टेशन और प्रोजेक्ट। देन एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में क्या है, इसके साथ एक कोर्स लेना पड़ता है हमारा स्किल एंड एबिलिटी बढ़ाने के लिए। इसमें क्या है, 2 टाइप्स है, one is compulsory courses, another is skill enhancement courses. This AECC ability enhancement courses are based upon the content that leads to knowledge enhancement. Skill enhancement courses, these courses may be chosen from a pool of courses designed to provide value based or skill based knowledge. Skill बढ़ाने के लिए and ability बढ़ाने के लिए this AEC को भी हम ले सकते हैं। इस पे क्या है, कोर्स होता है, इलेक्टिव कोर्सेस होता है, देन एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस होता है। दैट इज द आउटलाइन ऑफ CBCS, कोर, elective courses, then ability enhancement courses. Any course ಯಾವುದೇ any आप कोर कोर्स ले रहे हैं उसके साथ एक इलेक्टिव लेना पड़ता है एंड अनदर इन इज एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स को आप लेना पड़ता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। समझ में आ गए? अब हमारा NCISM में भी अभी इलेक्टिव्स किया है ना वो लोग। हेलो, Yes, sir. अगर हमको देखना है तो प्रैक्टिकली हमारा कोर्स सब्जेक्ट है BAMS आयुर्वेदा और पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। सो इलेक्टिव सभी अपलोड नहीं किया होगा शायद, ये नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है, अगर हमने फर्स्ट ईयर में वो अलग अलग इलेक्टिव सब्जेक्ट दिया है वो, सो फर्स्ट ईयर में हमारा मेन कोर सब्जेक्ट क्या होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पदार्थ विज्ञान। सो उसके साथ इलेक्टिव्स दिया है वो भी नहीं आ रहे। सो दैट electives can be specific related to Ayurveda. For example, Ruksha Ayurveda, that elective course is whether that is discipline specific or general one. Hello, Ruksha Ayurveda लेते हम elective course, for example, whether that is discipline specific elective or general elective course. हमारा आयुर्वेदिक के साथ कुछ रिलेशन है उसका, वृक्ष आयुर्वेद और अनदर गजायुर्वेद, अश्वायुर्वेद, ऐसे अगर कोर्स लिया, विच टाइप ऑफ इलेक्टिव दैट इज, that is related to his core subject. For example, मैंने सेकेंड ईयर में DG है, वृक्ष आयुर्वेद इलेक्टिव लिया तो वो DG के लिए हेल्प करता है। फर्स्ट ईयर में अगर माइक्रोबायोलॉजी इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया तो दिस फिजियोलॉजी एंड फर्स्ट ईयर का फिजियोलॉजी में भी माइक्रोलॉजी का पोर्शन कवर होता है। दैट इज डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ दूसरा ही कंप्यूटर यूसेज इन एजुकेशन ऐसे एक इलेक्टिव सब्जेक्ट दिया तो दैट इज जनरल इलेक्टिव होता है। इट इज नॉट generally unrelated subject discipline in intention to seek exposure is called as a general is called as a generic elective. एंड अभी बच्चों को हमने क्या कर रहे हैं, एक एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, एक प्रोजेक्ट करना है। सो दैट इज द छोटा प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन, पर्टिकुलर टॉपिक देते, फॉर एग्जांपल डायबिटीज प्रिवेंशन ऐसे। सो बच्चे ने प्रोजेक्ट करना है। एंड एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस, इस पे क्या होता है, एबिलिटी बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स वो लोग सेलेक्ट करना है। हम तो अब हमारा करिकुलम तो ये अभी नहीं कर रहे, बट CBCS में क्या होता है, अगर CBCS में इम्प्लीमेंट हुआ तो ये भी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस भी ऐड हो जाता है। अभी तो हमने कोर कोर्सेस पढ़ा रहे, इलेक्टिव कोर्सेस चालू है, तो एक प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं बच्चों को, बट एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस का अभी हमारा आयुर्वेद में तो नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर रनिंग। अगर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का क्या बोलते हैं, ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस को भी अप्लाई करना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट आउटलाइन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सम थिंग्स आर ऑलरेडी हैपनिंग, ये कोर सब्जेक्ट हो, इलेक्टिव इंट्रोड्यूस हो,
प्रोजेक्ट देना हो, ये सारे चीजें अभी अप्लाई हो रहे वन बाय वन. So that is the main idea of the क्यों elective दिया है. They have the some background of this choice based credit system है, वो बोला दिया है elective subject देना है. That's why हमारा BMS का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स को हमने elective 10 मार्क कुछ तो असाइन किया है elective कोर्स के लिए. सेकेंड BMS को भी elective करना है. कोर सब्जेक्ट के साथ क्यों elective दे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट किधर से आया. दिस इज कम फ्रॉम दिस CBCS सिस्टम. ये सिस्टम धीरे धीरे लागू होने वाला है. सो इसका प्रिंसिपल वन बाय वन वो लोग अप्लाई करने वाले. दैट्स व्हाई वन प्रोजेक्ट आल्सो वी आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CBCS. समझ में आ गया आपको क्या है. हेलो. Yes, sir. कंप्यूटर Yes, बेस्ड sir. टेस्टिंग. कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या है. कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कंप्यूटर यूज करके हमने उसका टेस्टिंग किया. दिस इज यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर बेस्ड, if you agree, I will take this concept from next class, because I am not able to take because my neck is paining. If you want, I will take this one in the next class. I will continue, because continuous seeing of laptop, eyes and neck will be paining. That's why I will continue in the next class. All of you okay? sir. Huh? Okay, Hello? sir. Okay. Continuous strain with eyes and neck, I am unable to, if I explain also it is not interest, I have tired, so it will be not effective. Simply if to complete these slides I will take. So to teach you interestingly, I am not able now, so I will stop today's session here only. I will continue that with next session.